Hari bol friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. So welcome back to another video where we'll be discussing about the most interesting chapter of Treasure Trove Volume 2, that is The Face in the Dark. It is my favorite chapter. So let's quickly start with the text, and side by side I'll be giving the explanation in Hindi. Okay. So let's start with the text. A Face in the Dark. Okay, so who is the writer of the story? So the writer of the story is none other than Ruskin Bond, who is Indian only, who was born in Kasauli in Himachal Pradesh. So he was born in a rich family. Okay, so he was, very cultural because he had the relation with both Punjabi as well as Himachal family. Okay, so let's not go into the depth of Ruskin Bond. Let's start with the story. So Mr. Oliver, an Anglo Indian teacher, was returning to his school late one night on the outskirts of his hill station of Shimla. From before Kipling time, the school had been run on the English public school lines, and the boys, most of them, were of the wealthy Indian families. They wore blazers, caps, ties. Life magazines in the feature on India had called it once the Eton of the East. Very important line. Had called it once Eton of the East. Mr. Oliver had been teaching in the school for several years. So यहाँ पर क्या बताया गया कि Mr. Oliver जो कि main hero है, I think so, he is the main hero of the story, and he is an Anglo Indian teacher who is returning to school late one night. वो वापस आ रहा है स्कूल एक रात को, और हिल स्टेशन में वो कहाँ रहता है, जनरली अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता है, ऑन द आउटस्कर्ट्स, जो हिल स्टेशन है उसके आउटर बाउंड्री एरियाज में, ठीक है, जैसे दिल्ली एनसीआर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आगे कि वो जिस स्कूल में पढ़ाता है वो इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइंस के ऊपर रन करता है, यानी वो उसके ऊपर बनाया गया है, और वो जिस स्कूल में वो पढ़ाता है वहाँ पर वेल्दी इंडियन फैमिलीज, बहुत ही रिच इंडियन फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं, और उसे कहा जाता है इसलिए इटॉन ऑफ द ईस्ट। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पैरा। द सिमला बाजार with the cinemas and the restaurants was about 3 miles away from the school, and Mr. Oliver, a bachelor, usually strolled in the towns in the evenings, returning after dark, when he would take a shortcut through the pine forest. Generally जब वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता था, इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ शिमला, और वहाँ से शिमला है, शिमला नहीं है, शिमला है, SIMLA, ठीक है, टेक्स्ट वर्ड यूज़ करने हैं, कोशिश करनी है, और वो जनरली अपना टाइम वहाँ पर स्पेंड करता है। इसके अलावा वो अपनी जो इवनिंग में रिटर्न करता है थ्रू पाइन फॉरेस्ट, जहाँ से कोई आता जाता नहीं है जनरली। व्हेन देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग विंड, द पाइन ट्रीज मेड ईयरी साउंड्स, kept most of the people on the main road, but Mr. Oliver, being a nervous and unimaginative man, or he was not an imaginative person, so he carried a torch, and the batteries were running down. He moved swiftly through the forest path. When its flickering light fell upon a figure of a boy who was sitting alone on the rock, Mr. Oliver stopped. Boys are not supposed to be out of the dark. What are you doing here, boy? Asked Mr. Oliver sharply, moving closer to the boy to recognize the miscreant. But even when he approached the boy, Mr. Oliver sensed that something was wrong. अब वो चलता चलता पाइन ट्रीज के थ्रू जा रहा है, वहाँ पर वो क्योंकि एक अनइमेजिनेटिव मैन है, उसको भूत पिशाच वगैरह इसका कोई डर भय नहीं है, इसलिए जो बाकी लोग थे वो मेन रोड से आते थे, मगर ये पाइन फॉरेस्ट से आता था शॉर्टकट से। अब रास्ते में ही चलता चलता देखते हैं कि वहाँ पर एक बॉय है, एक लड़का है जो कि बैठा है रॉक के ऊपर, और उसने अपना मुंह जो है नीचे किया हुआ है, ठीक है। और उसने कहा कि जो लड़के होते हैं उनको तो रात के बाहर आने ही नहीं दिया जाता। आगे पढ़ते हैं। उसने जब पूछा उससे कि आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, इवन व्हेन ही अप्रोच्ड द बॉय, मिस्टर ऑलिवर सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग। द बॉय अपीयर्ड टू बी क्राइंग, हिज हेड वाज हंग डाउन, ही हेल्ड हिज फेस इन हिज हैंड्स एंड हिज बॉडी वाज shook convulsively. It was a strange soundless weeping. Mr. Oliver felt distinctly uneasy. वो जब पास गया तो लड़का धीरे धीरे रो रहा था, वो मतलब जैसे कुछ छुपा रहा है, कुछ बयां करने की कोशिश भी कर रहा है, मगर जो पहली बारी मिस्टर ऑलिवर को कुछ अनईजी सा फील हुआ। वेल व्हाट्स द मैटर, ही आस्क्ड, his anger giving the way to the concern. What are you crying for? The boy wouldn't answer and look up. His body continued to be ragged and silent, sobbing. Come on, boy, you shouldn't be out here after the hour. At this hour, let me tell me the trouble. Look up. The boy looked up. He took his hands from the face and looked at the teacher. The light from Mr. Oliver's torch fell on the boy's face.
कैन यू कॉल इट अ फेस? इट वॉज नॉट अ फेस भाई, वो फेस नहीं था। जब उसने कहा कि बेटा आप बताओ तो सही कि आपसे गलती क्या हुई, आप क्यों ऐसे हो, और एकदम से लड़के ने फेस ऊपर उठा और क्या निकला, ये निकला। क्या मतलब, उसका फेस फेस कहलाने के योग्य ही था ही नहीं, क्योंकि इट हैड नो आईज, ईयर्स, नोज और माउथ. इट वॉज जस्ट अ राउंड स्मूथ हेड with a school cap on the top of it. And that's where the story should end. But for Mr. Oliver it was not the end here. यहाँ पर ही स्टोरी को एंड हो जाना चाहिए था, मगर ओलिवर के लिए ये एंड नहीं था, कुछ और भी बड़ा आने वाला यानी, ठीक है. The torch fell from his trembling hands. He turned and scrambled down the path, running blindly through the forest, calling for help. He was still running towards the school building when he saw the lantern swinging in the middle of the path. अब वो क्या देखता है, उसकी आंखें आंखें उसकी एकदम फटी की फटी रह जाती है, खुली की खुली रह जाती हैं. वो हैरान हो जाता है देखकर. उसके हाथ से उसकी टॉर्च गिर जाती है. भागता भागता ट्रेम्बलिंग डाउन द पाथ, वो स्क्रैम्बल डाउन द पाथ, रनिंग टू द ट्रीज, कॉलिंग फॉर हेल्प. ऊंची ऊंची चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, मगर कोई नहीं था. वहाँ पर सडनली कौन आता है, एक लैंटर्न घुमाता हुआ एक इंसान आता है, ठीक है, एक आदमी आता है जो था वॉचमैन, ठीक है. गैस्पिंग फॉर ब्रेथ. व्हाट इज इट साहिब? आस्क्ड द वॉचमैन. हैज देयर बीन एनी एक्सीडेंट? व्हाई आर यू रनिंग? आई सॉ समथिंग हॉरिबल, a boy weeping in the forest, and he had no face. No face, Sahib? No eyes, no ears, no mouth, nothing. Do you mean like this, Sahib? Asked the watchman, and raised the lamp to his own face. The watchman had no eyes, ears, not even an eyebrow, no features, and that's the time when the wind blew the lamp out. कितना हॉरिबल सीन था कि जब इसी टाइम पर क्या हुआ कि जो लाइट थी बुझ गई, और उस वॉचमैन का खुद का कोई फीचर नहीं था. अब हम कुछ एक्सट्रैक्ट्स डिस्कस करेंगे. सो हु वॉज मिस्टर ऑलिवर? वट वॉज हिज यूजुअल लेजर टाइम? मिस्टर ऑलिवर इज एन एंग्लो इंडियन टीचर हु वॉज टीचिंग इन द स्कूल located 3 miles away from Shimla. He would usually walk down to Shimla Bazaar and would return after the dark by taking a shortcut. What is called the town of the East, and why all the boys living in the Shimla are called Eton of the East? So why? Because the Eton of the East is one of the most reputable and expensive English boarding school for the boys in the Berkshire near Windker. तो मेन लाइन्स यार इसमें से लिखनी है ढूंढकर, बिकॉज द स्कूल हैड बीन रन ऑन द इंग्लिश पब्लिक स्कूल लाइन्स. मेन आंसर ये है. व्हाट काइंड ऑफ द वेदर वाज देयर ऑन द नाइट when Mr. Oliver was returning to school? According to the spirit of the story, the author had created an eerie atmosphere in the story. It was the night time and the strong winds blew. यही मेन लाइन है. बाकी मे बी अगर लॉन्ग आंसर आता है तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर ऑलिवर एनकाउंटर while coming back to school one night? What did he do after that? While coming back to school one night, he encountered a boy who was sitting on the rock. His head was hung down and held his face in his own hands. After seeing the boy, Mr. Oliver stopped near the boy and asked him what was he doing there. और वो ये भी पूछते कि क्या उसने कोई मिसक्रिएंट किया था. So here is where we will be ending. हरी बोल.